sequence container. Okay, so likewise in STL there are different data structures available. So in the previous lecture we have seen we have discussed about this vector data structure which is available in STL, and we have also discussed these examples. Okay, so related to vector, some standard methods are there. Okay, to iterate for iteration purpose, like for traversing through that vector, we can use iterators. Okay, so these are the methods which are available for that. So begin, end, C begin and C end. So it will point the it will make that pointer to go to the initial position here to the 0th element, and this will point make it point to the last element. Similarly, here C is added for constant. So this also moves, the pointer moves at the beginning, but it won't allow you to modify that particular element. So that's the reason that C is added here as a constant. So then it has got its own modifiers also, like push back, pop back, insert, erase, clear. So based on this, we have seen the examples also yesterday about based on this vector class. So first thing that we have seen, when we are using the STL, any particular data structure you can use. One of the data structure I have shown you the example, that is vector. But likewise, there are many data structure which are listed in books also. If you see sequence containers, vector list is there. Then associate containers are there, derived containers are there. So derived. So likewise, here these are stored in sequential manner. Okay, in at the beginning we have seen this bifurcation actually. These are stored, sequence containers are stored in a sequential manner. Then next is associative container, in which key value pair, using unique key you can access them. Okay, and derived containers are the one, like example given is stack, queue and all that, which can be implemented using sequence container. Okay, so implementation will be there. These are derived ones. Okay, not the built-in one or basic ones, but derived ones which can be implemented with the help of your sequence containers or like that. So these are the different container type. Container मतलब ऐसे कुछ अलग नहीं है. Container is simply like it is holding different types of classes. अब सब classes एक साथ में रखने से better है कि उनको segregate करके रख दो. Okay, so just those classes are segregated in 3 different containers. That's the reason that container concept is there. Otherwise, as such a container मतलब 3 type के container मतलब बहुत कुछ अलग concept है. It is not so. Just putting all the classes here randomly, it's better to segregate them based on their way of ऑपरेशन है ना. अगर वो सिक्वेंशियली काम कर रहे तो सीक्वेंस कंटेनर में डाल दो, तो वो सेग्रीगेशन है डिफरेंट क्लासेस का. और ये क्लासेस रिप्रेजेंट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड इटरेटर्स टू एक्सेस दोज एलिमेंट्स है ना. मतलब वहां पे पॉइंटर आपको लेके जाना पड़ेगा टू पर्टिकुलर एलिमेंट इन दैट डेटा स्ट्रक्चर एंड यू कैन एक्सेस दैट एलिमेंट. सो फॉर दैट पर्पस इटरेटर्स आर देयर व्हिच आर जनरली पॉइंटर्स, क्योंकि वो डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रैवर्स करने के लिए यूज होते हैं. ओके, so this part we, and iterators also different types are there in iterator, forward, backward direction, bidirectional, randomly you can access and all that. So mainly what you need to do is whatever data structure you want to use, you just have to go to search for that data structure. मतलब अगर आपको क्यू यूज करना है या स्टैक यूज करना है, so based on that you need to find out that particular data structure. जैसे हमने अभी वेक्टर को यूज किया है, तो वेक्टर के लिए what all iterators are there and modifiers are there, that you need to search. तो similarly अगर आपको स्टैक यूज करना है, तो फॉर स्टैक इन STL what all built-in modifiers are there and iterators are there, that you need to find. ठीक है, तो once you know those iterators and modifiers, then next job is what, just using it. तो पहले तो आपको वो फाइंड आउट करना है. देन फॉर यूजिंग दोज थिंग्स व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू इंक्लूड दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी. ओके, यहाँ पे वेक्टर यूज कर रहे हैं इसलिए वेक्टर की लाइब्रेरी, एंड देन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर
class. So this is vector class, this is the object, and now I want to create it as a integer vector. So this angular bracket. And then after that, based on the modifiers and iterators that you found, which are built in, maybe in books or internet, you can search. ऐसे कोई आपको एकदम randomly question नहीं करेगा. Like 2-3 data structure you should know. Like say for example vector, stack और queue. ये 2-3 आप study कर लो. ओके अदरवाइज ऐसे मतलब पूरा मगअप करने की या रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो है ना 2-3 स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर यू शुड नो and try to find sets also. So these 2-3 data structure you try to find out the important methods or modifiers in that, and once you know those modifiers, then next is what, how to use them. So like this we have seen object we have created, then simply on that object you can call those methods. Pushback, or agar iterator hai to iterator you can call that method in this manner, it will return what, a pointer. So suppose I don't know which type of pointer and all that, so that's the reason here directly I have taken auto. Okay, so automatically it will convert it into that particular pointer type. Okay, so that's the reason here everywhere I have taken auto, because I'm not sure which type of pointer will be returned and all that. So in those cases you can use this auto declaration for this variable a. So it will return the pointer, beginning pointer, and then we are using that pointer, we are accessing all the elements of this vector. Okay, so initially आपका a is a pointer, it will point to the beginning, that is first element, until it is not equal to end element, we are going to iterate through it. Each time we are incrementing a by 1, and as this is a pointer, we have to access its element with the help of asterisk. Okay, so this example we have seen. So with this example, what we have seen is like we should be able to use those method, and in order to use those method, we should be aware about it कि कौन-कौन से methods उस class में available है. So that is how you need to proceed with STL. Okay, so this part we have discussed already. Now today we are going to discuss the last part in this STL, that is algorithms. In this structure, if you remember that diagram, block diagram, containers are there. Okay, iterators are there. Iterators, just now I've shown you example, begin, end. So like that, these are nothing but the pointers. You can access element with the help of these pointer. Okay. So iterators are there, and last point is algorithms. So it also has got predefined algorithms which you can use. Now algorithm, like most frequently used algorithms implementation is already available. जैसे कि min max algorithm है या searching algorithm है, आपके sorting quick sort algorithm है, या like sorting, searching जो most frequently used algorithms होते हैं, so all those algorithms are available in STL. Okay, तो जैसे data structure available है वैसे algorithms भी available है. अब data structure implement करने के लिए in STL what is done? They have created the template classes. क्लास क्रिएट किया है ना, सभी का टेम्पलेट क्लास है. अब ये वेक्टर भी हम यूज कर रहे हैं, तो दैट इज टेम्पलेट क्लास विच इज अवेलेबल इन STL. So similarly, when we are creating the algorithms, अब algorithm is nothing but we are writing the function. algorithm मतलब क्या है कि function लिख रहे हैं हम. अब आपने bubble sort या फिर binary search या quick sort है ना, अलग अलग algorithms लिखे होंगे. algorithm लिखना मतलब function लिखना है ना. Now, can we sort integer type of numbers? Yes. Can we sort float type of numbers? Yes. So for any data type, we can apply sorting algorithm or searching algorithm, है ना? So it is not specific to any data type as such. मतलब ऐसे कुछ नहीं कि integer data type है तो अलग type से search करेंगे. Float है तो अलग टाइप से. The logic remains same. When we say binary search, so it will work in a similar manner irrespective of the data type. So for those type of algorithms already it is available in this STL. Okay, जिसमें data type. So now how these algorithms are implemented? These algorithms are implemented as template functions. Data structure कैसे implement किए हैं?
These are the data structure. Vector is a data structure. How these are implemented? These are implemented as template class. तो सिमिलरली ये अल्गोरिदम्स कैसे इंप्लीमेंट किए? टेम्पलेट फंक्शंस. ओके, so template functions are already available here. Now what you should know is अगर वो डायरेक्टली अवेलेबल है तो हमें क्या पता होना चाहिए? Like standard API, when we say API or library we are using. तो when we are using library, suppose आप string dot h यूज कर रहे हो, string के सारे functions, string comparison, string concatenation and string what you call comparison होता है, copy होता है, strcpy. So when we are using all these functions which are available, or string length is there, so when we are using all these functions, predefined function, what is the first thing that we do? We include that library. तो पहले हमें वो लाइब्रेरी इंक्लूड करनी जहां पे ये सारे फंक्शंस अवेलेबल है. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, दैट इज इंक्लूड द लाइब्रेरी. सेकंड थिंग इज यू शुड बी अवेयर कि वो स्ट्रिंग डॉट एच में कितने फंक्शंस है स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए, कौन कौन से फंक्शंस है, तो वो आपको लिस्ट पता होनी चाहिए. थर्ड थिंग इज when you know the list that these many functions are there, you should know their syntax also, कि उसमें इनपुट पैरामीटर क्या देने हैं और आउटपुट क्या आता है. जैसे कि स्ट्रिंग कंपैरिजन है, स्ट्रिंग कंपैरिजन में 2 स्ट्रिंग शुड बी गिवन एज द इनपुट. Whereas अगर हम स्ट्रिंग लेंथ बोलते हैं तो स्ट्रिंग लेंथ में ओनली 1 स्ट्रिंग विल बी गिवन एज इनपुट एंड आउटपुट इज 1 इंटीजर नंबर. तो उसमें लाइक व्हेन प्रीडिफाइंड फंक्शंस आर देयर, यू शुड बी अवेयर अबाउट देयर सिग्नेचर, कि उसमें इनपुट पैरामीटर क्या जाने चाहिए और उसका रिजल्ट क्या आता है, आउटपुट क्या आता है. Okay, so this much knowledge you should have when we are dealing with the library, कि उसका signature क्या है और कौन कौन से functions available है. Okay, so that is what we are going to see in algorithms. Okay, so in algorithms I hope you got this point. We are now talking about these algorithm in this particular diagram. This is complete STL, so this part we have already seen, and now we are discussing about the algorithms. Okay, so first one is min-max algorithm. Okay, so how this min-max algorithm works? This function returns a pair. You see, this basically min-max algorithm is used to find the largest and the smallest element in your inputs. Whatever input you give, it will try to search the largest and the smallest element. Okay, so the first signature that is available for this min-max is this one, min-max, and 2 inputs you can give, a comma b. This function returns a pair in which first element is of minimum of the 2 elements and second element is the maximum of 2 elements. So what this function will return, it will return 2 values, है ना. अब आपको min max, as the name suggests, it returns minimum as well as the maximum number or largest and the smallest number. So it will return 2 numbers. तो पहला नंबर कौन सा होगा? minimum होगा, and second will be the maximum one. Okay, so it will return 2 values. So return value is a pair. Pair itself is a data structure. Pair itself is a data structure. Okay, so how to declare it and how to call this method, I'll take one example to understand that. But its return type, now it is clear that it is taking 2 input parameters. This is the name of that function that we need to call, and in its return value is what? Pair. So this much knowledge you should have. Okay, in this pair it is returning what? First element as the minimum and second as the maximum. Okay, then second format of min-max is you can also pass the array elements as input. Here we are passing only 2 input parameter, but many a times no complete list is there. अब suppose आपने सबके marks लेके रखे student के, अब वो marks आपको उसमें से लोएस्ट स्कोर कौन सा है और हाईएस्ट स्कोर कौन सा है, मतलब टॉपर ऑफ द क्लास कौन है और लोएस्ट स्कोर कौन सा है. सो दैट इफ यू वांट टू फाइंड आउट. ओके, तो वो सपोज 72 स्टूडेंट्स के मार्क्स है. सो फ्रॉम दो 72 मार्क्स this function will find out the minimum and the maximum number. Okay,
So in that case, what will be the input? All those array elements will be the input to this min max. Okay. तो दो formats में वो available है. Either in two numbers you can find out min and max, or you can find it out in a list or array. Okay. So this function returns similarly as first version. मतलब pair आपको output मिलेगा. Only difference is that in this version the accepted argument is a list of integers or string. सिर्फ difference क्या है input argument में यहाँ पे. Here we are giving array elements. Okay, it is useful in cases where we need to find maximum and minimum elements in list without sorting. Okay, तो list है आपकी sorted list नहीं है and directly you want to find out the minimum or maximum number. So in those situations generally this min max algorithm is used. So this is the example. Now first important thing is, as I told you, when we are using predefined function we need to include that library first, है ना. तो यहाँ पे कौन से लाइब्रेरी में ये min max फंक्शन अवेलेबल है? एल्गोरिदम. सो STL में जितने एल्गोरिदम्स है, लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग, मेनी एल्गोरिदम्स आर देयर, इंक्लूडिंग min max. So those algorithms are available in this algorithm header file. ओके, तो जब आपको STL में से एल्गोरिदम यूज करना है तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज हैश इंक्लूड एल्गोरिदम. जैसे हमने वेक्टर के लिए क्या इंक्लूड किया था? हैश इंक्लूड वेक्टर. ओके, सो सिमिलरली हर एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग हेडर फाइल है. लाइक इफ यू वांट टू यूज स्टैक, इन दैट केस हैश इंक्लूड स्टैक, hash include vector, hash include queue. So like that, for every data structure there is a different header file. Whereas algorithm के लिए क्या है? सारे algorithm एक header file में, that is algorithm. Okay, so one file you need to include here. Then इसमें हमने क्या देखा है? Return type is a pair. Pair itself is a data structure. Okay, जो कि template में ही data structure available है ये. जैसे आपका वेक्टर अवेलेबल है वैसे पेयर भी अवेलेबल है. तो पेयर मतलब एज द नेम सजेस्ट इट होल्ड्स टू वैल्यूज टुगेदर. ओके, और ऐसे कुछ नहीं कि फर्स्ट वैल्यू इज अ की और कुछ इंपॉर्टेंस, ऐसे कुछ नहीं. पेयर में वैल्यूज होल्ड करता है वो. ओके, तो पेयर इज अ डेटा स्ट्रक्चर व्हिच होल्ड्स टू वैल्यूज टुगेदर. ओके, तो दिस इज हाउ आई डिक्लेयर, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास पेयर, दिस इज द ऑब्जेक्ट आई हैव क्रिएटेड. ओके, और इस ऑब्जेक्ट में किस टाइप के पेयर आपको मेंटेन करने हैं? दोनों इंटीजर, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू. यू कैन मेक कॉम्बिनेशंस आल्सो. फॉर पेयर इट इज एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन मेक कॉम्बिनेशंस आल्सो. इंटीजर, फ्लोट, फ्लोट डबल, किसी भी कॉम्बिनेशन में दो वैल्यूज वो होल्ड कर सकता है इन वन गो, मतलब टुगेदर, लाइक इन वन ऑब्जेक्ट इट इज होल्डिंग टू वैल्यूज लाइक दैट. ओके, so in this way this pair object is created. This is the name of that pair object. Okay, so now I'm calling that min max algorithm. So I'm calling here min max algorithm. I'm passing two input arguments here. Okay, any numbers I can pass, or variables also I can pass, a comma b. ठीक है, यहाँ से यूजर से a और b की इनपुट ले लो एंड यू पास इट एज इनपुट पैरामीटर. दिस min max रिटर्न्स पेयर. अगर वो पेयर रिटर्न कर रहा है तो पेयर का ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे होना चाहिए on the left hand side. Okay, so that pair object is there. Okay, so now from this pair, as here it is clearly mentioned, first element is the minimum and second is maximum. So from this pair object, this mnmx pair object, I'm getting the first element. So this first will return me the first element in the pair, and second will return the second element in this mnx. So this first and second, these are declared where? In this mnmx, which is pair type of object. Okay, so pair is what? Pair is a object which holds two values together. अब दोनों वैल्यू में से मुझे पहली बार फर्स्ट वैल्यू निकालनी है, देन सेकंड वैल्यू निकालनी है. वो कैसे मेंशन करूंगी मैं? mnmx डॉट फर्स्ट मैंने जब कहा है तो वहां पे कौन सी वैल्यू आती है? आपकी फर्स्ट वैल्यू. And mnmx dot second, when I'm saying I'll get the second value, है ना? So here is how we are accessing first and second value. First, this min max returns first minimum element which gets stored in this first value. पहले minimum value हम display करेंगे और बाद में maximum. So this is about min max algorithm. So like that is what you need to understand in all the algorithms which are available in STL. Okay,
तो मिनमैक्स का ये फॉर्मेट हमने देख लिया, जहां पे हमने दो इनपुट दे दिए थे, डायरेक्टली वी आर कॉलिंग मिनमैक्स, एंड फॉर दैट वी हैव इंक्लूडेड अल्गोरिदम लाइब्रेरी, है ना, लाइब्रेरी हमने इंक्लूड की थी मिनमैक्स की, एंड देन इट रिटर्न्स अ पेयर। अगर पेयर रिटर्न कर रहा है तो पेयर का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना लिया, okay, and that we are collecting, that return value we are collecting in pair, okay. So there is one more format of min max wherein array elements you can pass. तो क्या करना है, बस आपको यहाँ पे array element in curly brackets pass करने हैं, ऐसे ही हम initialize करते हैं array को, है ना, using curly braces you can initialize the array. So similarly यहाँ पे भी आपको वो round parenthesis के अंदर curly braces में those values you need to give separated by comma. तो these array element, these are not sorted elements, है ना, scattered अलग अलग type के elements है. So out of that, मतलब यहाँ पे 1000 elements भी हो सकते हैं, like 500 elements, so n number of elements could be there, and out of those many elements, it will directly find out the mean and max number. So now return type is again a pair, and when you say mn mx, this pair dot first, you will get the minimum value, and when you say second, you will get the maximum value. तो पहले आपका output आएगा 1 और second output क्या आएगा, 6 आएगा. So this is the you can say application of min max, जहां पे आपके बहुत सादा नंबर होते हैं. अब दो नंबर में से min max निकालने के लिए भी generally we don't require, we can have small logic also for that. लेकिन उस लॉजिक में भी आपको if else चेक करना पड़ता है, वो सारा, है ना, if else conditions and all that. Even that is not required. Directly you can give a comma b, two values में से min max मिलेगा यहाँ पे. और this is actually very useful wherein n number of elements, कितने भी elements हो सकते हैं, in a one go you can get directly the minimum and maximum value. Okay, so this is also very useful algorithm which is available in STL, and it is very easy, like we are simply using it. use कर रहे तो बस आपको familiar होना चाहिए उसके syntax. Okay, so this is about the min max algorithm. And now so likewise there are many algorithms available. It is not only not possible only to cover all these algorithms and data structure. So some samples actually we are discussing now. So min max algorithm I have discussed. Then similarly sort also, sorting is also possible. Okay, so how to do sorting or how to use this sorting algorithm. So for that, first you need to understand the signature of this sort function. This is the sort function which you can directly call from algorithm, and to this sort two input variables you need to give, the starting address and the end address. Okay, तो अगर मान लो आपके array में आपको search करना है, sorry sort करना है, पूरे array को sort करना है, तो array में कौन से elements आपको sort करने हैं, तो initial address of the array and the last address of the array. So these two input to be given to this sort function. Okay, so two inputs you should give. Start address is the address of the first element of array, and end address is the address of last element in the array. Okay, तो आपका array है, list है, vector है, जो भी है उसका starting address और end address आपको देना है, जितने भी elements आपको sort करने हैं. So automatically it will sort those elements and restore it to the same location. Sorting के बाद उसी array में वो आपका sorted array मिल जाएगा. Okay, so actually sorts the range of elements. Okay, so this is the example in order to understand. So again we have to include the algorithm library here, and this bit slash std c++.h, this is one generic library. We can say ki once we include this particular library, you need not include any other library, because everything is included here. All libraries are available here, so explicitly you do not need not mention any library as such. Okay, so jab aap like that's the reason in this example I haven't mentioned hash include algorithm, because everything is available in this bit slash std. Okay, so if you are, it's not compulsory, ऐसे कुछ नहीं कि ये कर ले तो बहुत हम अलग टाइप की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, but this you should know, that's it. Otherwise you can, if you are comfortable with hash include iostream.h and hash include algorithm, that is absolutely fine, but you should be aware, है ना, लिखते वक्त आप ये यूज करो या वो यूज करो, that is absolutely okay, but just be aware about that this is also available.
Now, here one array I have initialized, declared and initialized. Okay, randomly I put element. These are not sorted ones. Now, what I want for this sort, here I am calling this sort function. अब sort function में क्या बोला है उन्होंने कि start address and end address. तो start address, where is the start address? Simply if I say array, ARR, that is initially, if you remember, I explained you this concept. दो तरीके से आप इनिशियल एड्रेस निकाल सकते हो एरे का. कौन कौन से तरीके हैं वो? सिंपली बाय सेइंग ARR, और अनदर मेथड इज how to get the initial address of this array? ampersand array of 0. Yes, ampersand array of 0. So when I say simply array of 0, it will return what? 1. And when I put and in front of it, ampersand in front of it, it will return me the address of the first element. So similar, that is one way. Okay, another way is simply saying ARR. Okay, yes, correct. So another way is simply saying the name of that array. Okay, तो starting address तो मुझे मिल जाएगा, start address. End address मुझे कैसे मिलेगा? End address कैसे मिलेगा? स्टार्ट एड्रेस इज वेरी सिंपल कि मैं एक तो क्या करूंगी, एरे ऑफ 0 का को एंड लगा दूंगी आगे, या फिर सिंपली आई से ARR, दैट्स इट, है ना. बट हाउ टू गेट द एंड एड्रेस? कैसे मिलेगा? एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन. हाउ टू गेट द एंड एड्रेस? एरे की साइज कैलकुलेट करके. हाँ, बिकॉज आई डोंट नो कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर यहाँ पे. मतलब मुझे आई डोंट नो कि 10 एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है. इंस्टेड ऑफ काउंटिंग एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, व्हाट आई कैन डू इज आई विल कैलकुलेट द साइज ऑफ एरे. इस एरे की साइज क्या आएगी बताओ तो? सपोज हियर आई कुड सी 10 एलिमेंट्स आर देयर, है ना. यहाँ पे 10 एलिमेंट दिख रहे हैं हमें. तो इफ आई से साइज ऑफ ARR, व्हाट विल बी द रिटर्न वैल्यू? 40, है ना. 10 नहीं आएगा. 10 इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट साइज मतलब क्या है? हर एक को कितनी साइज मिली है यहाँ पे? इंटीजर मतलब 4 बाइट्स. इसे 4 बाइट, इसे 4 बाइट. सो लाइक वाइज 10 into 4, तो 10 4s are 40. सो दिस मच इज द साइज ऑफ दिस एरे. अब हमें क्या देना है? इसका एड्रेस देना है, एंड का एड्रेस देना है. ओके, तो एंड का एड्रेस कैसे मिलेगा आपको? यहाँ पे सी सपोज ARR इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द इनिशियल एलिमेंट. अगर मुझे एंड का एड्रेस चाहिए तो हम मुझे एग्जैक्टली काउंट चाहिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. इसमें कितने एलिमेंट्स है? नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है. तो इफ आई से ARR plus 10, what I'll get? ARR plus 1, what I'll get? Next element address. हाँ, address of the next element. Simply ARR is the address of first element. ARR plus 1 is the element address of next element. ARR plus 2 मतलब किसका address है? 8 का. ARR plus 3 is this address. So similarly, ARR plus 10 will give me the address of the last element. लेकिन मुझे ये 10 वैल्यू कैसे मिलेगी? यहाँ पे हम क्या करेंगे? साइज ऑफ एरे दैट इज 40 डिवाइड बाय द साइज ऑफ वन एलिमेंट. एक एलिमेंट की साइज ऑफ एरे ऑफ 0 मतलब एक एलिमेंट. एरे ऑफ 0 मतलब जस्ट वन एलिमेंट आई एम रेफरिंग. इसकी साइज क्या है? 4, और पूरे एरे की साइज क्या है? 40. तो 40 divided by 4 will give me number of elements in my array. Okay, that's the reason this calculation is there. N is nothing but number of elements in my array. So size of array divided by size of one element will give me number of elements. तो n में क्या मुझे मिलेगा? Number of elements. Okay, तो ये सब मैंने display किया just for understanding purpose. And now to this sort, now starting address is what? ARR. And what is end address now? ARR plus what is end address now? ARR plus ARR plus n. n, है ना. मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं आप एरे में इनिशियल पॉइंटर में उतने एलिमेंट्स ऐड करोगे तो वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर तक पहुंच जाएगा, है ना.
तो first element is first input is the static address and the last one is the end address, है ना? ARR plus number of element जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया. So this is how that sorting algorithm. तो अभी आपने जो भी डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े हैं अलग अलग एल्गोरिदम, तो वो इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आपके STL में readily available है. We are directly saying sort, okay, and then you will get the you give the input parameter, the starting and end address, you will get the sorted array in ARR itself. मतलब इसी array में वो override करेगा sorted array, okay? तो you will get the result back in the same array. तो यहाँ पे इसलिए रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं है, आपका रिटर्न किस में जाएगा? ARR में ही जाएगा, उसी ओरिजिनल array में. And then after that I am displaying those sorted elements on the screen. Okay, so simply क्या किया हमने? बस उस फंक्शन को यूज किया. आई एम नॉट राइटिंग दैट एल्गोरिथम, आई एम डायरेक्टली यूजिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम. ओके, so this is the, you can say, power of STL. Already everything is available here. अब आपको एक स्पेसिफिक सपोज सर्च एल्गोरिथम करना है, डायरेक्ट ऐसे कॉमन सर्च यू डोंट नो ना कि विच सर्चिंग एल्गोरिथम इज इम्प्लीमेंटेड बिहाइंड. तो अगर स्पेसिफिक यहाँ पे बाइनरी सर्च का मैंने पर्पसली एक एग्जांपल लिया है कि बाइनरी सर्च ही करना है आपको फॉर एग्जांपल, तो इन दैट केस दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बाइनरी सर्च. अब बाइनरी सर्च में क्या होगा? स्टार्ट एड्रेस, एंड एड्रेस एंड द एक्चुअल वैल्यू दैट यू वांट टू सर्च or you are looking for. Okay, so this is the syntax of binary search algorithm. तो binary search आपको ऐसे कॉल करना है, उसको start end address देना है और जो वैल्यू आपको सर्च करनी है. Okay, so this is the description I have given, just have explained all those things to you. So let us discuss the example. तो ये array है आपका. Similar the way I have calculated the size in the previous example, and size of this array divided by size of a of 0. It will give me number of element. Number of element a size में आ गए. Now sort में हमें क्या क्या input देना है? Start address, end address and the value that you are looking for. So start address is a, end address is a plus this size, है ना? A size. That is the end address. Sorry. This is sorting I am using. Binary search से पहले rule is that you have to, it should be sorted, है ना? बाइनरी सर्च के लिए पहला रूल क्या है? array should be sorted one. Okay, so first I am sorting this array, okay, with the help of the previous method which we have discussed just now, है ना? ये अभी हमने sorting को discuss किया था. तो first we'll sort this entire array, okay, and after sorting the array I am using binary search. Okay, so after sorting I am using the binary search here. So if now this binary search will return you what? True or false. अगर आपको मिल गया वो तो then you will get a positive value there, otherwise else में. Okay, so if this element is searched here, okay, if you get this particular element, अभी हम क्या कर रहे हैं वहां पे? The syntax is start, end address and value to find. So start address is a, end address is a plus a size, and then suppose I want to search whether 2 is there or not. इस array में 2 है कि नहीं मुझे search करना है. So now the third element is 2. So I am calling binary search. I am giving the input. Now if it is true, if it gets the element, then it is true. Then we'll display element found in the array. Else we are displaying element not found in the array. So I need not write the logic of the binary search. Directly it is available, and predefined functions I'm using here directly. Okay, simply proper address to be given, start end address and the element that we are looking for. So those inputs once you give, you can directly use those algorithms. Okay, so this is about the STL algorithms which are already available. Okay, so we have discussed about some few algorithms